Hello, dear students. This is your teacher Rebecca Dil from RA Knowledge Spot. Dear student, today's what the agenda or what the topic that we have to cover in this video is again factorization. But as you know that there are many types and kinds of factorization, we are going to discuss specially chapter number 5 and all the relevant example of chapter number 5. There are many example you have in this chapter, so we are going to cover all these example in this video. Number one, that is a very simple kind of factorization, that is the common type. मीन्स अगर आप ये नंबर्स को देखें तो 5a माइनस 5b प्लस 5c है. ये ना सिर्फ आप नाइन्थ में आपने तो पढ़ा है, लेकिन जितने आपके बेसिक होते हैं 6-7 से आपके स्टार्ट कर देते हो, तो ये तो सबसे बेसिक आपकी फैक्टराइजेशन है. इसमें देखें आपके पास सेम नंबर क्या है, आपके पास इन तीनों टर्म्स में ये 3 टर्म्स हैं आपके पास, और 5 यहाँ से कॉमन नंबर है. कॉमन मतलब सेम. तो जब आप इसको कॉमन ले लेते हैं, इसका मतलब जैसे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5. उसके बाद आप क्या करेंगे, देन व्हाट यू हैव टू डू, द ओनली नंबर दैट लेफ्ट हियर इज a, then minus b, then plus c. So the only common number, that is 5, you took it common, and the rest of the number you have to write it as it is. So this is the most simplest form of factorization. Moving towards the next part, that is 5a minus 5b minus 15c. आप क्वेश्चनर को देखें कि क्वेश्चन बनाने वाले ने कि कितना टेक्निक से आपको क्वेश्चन यूँ दिया है कि पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन, अब थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ देयर इज़ अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू. नाउ अगेन यू आर गोइंग टू टेक 5 कॉमन, बिकॉज अब कॉमन लेने की टेक्निक क्या है, आपने एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो तीनों को या जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में जितने जो नंबर्स आते हैं, जो न्यूमेरिक्स होते हैं, उनको डिवाइड करें. लाइक 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15. अगर आप लिटरल्स को देखें, जैसे ए बी सी हैं या वेरिएबल्स होते हैं, तो यहाँ कोई लिटरल जो मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, लिटरल का मतलब होता है ए बी सी डी ई एफ जी, सारे जो होते हैं ये लिटरल्स होते हैं. मैथ्स में इनको लिटरल्स आप कॉल करते हैं. फाइन, जैसे ये हैं, दिस इज़ ए बी एंड सी. ओके, देन अब आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लिया, लेकिन ए बी सी कॉमन नहीं आ रहे, ये एज इट इज़ आ जाएंगे. अब इसकी थर्ड फॉर्म देखिए फैक्टराइजेशन की, यहाँ कुछ 4 नंबर्स लिखे हैं, 3x माइनस 3a प्लस XY माइनस AY. अब हमें अगर हम इस कैटेगरी को में जाएँ या ऐसे करना चाहें, तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो सब में कॉमन हो. लाइक 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, x यहाँ पर है तो यहाँ नहीं है, a यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ नहीं है. तो हम पार्टीशन कर देते हैं, हम इन 2 नंबर्स को ले लेते हैं और इन 2 टर्म्स को ले लेंगे, और पार्टीशनिंग के बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. कैसे, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, यहाँ से देखिए दोनों में से कॉमन आ रहा है ये. उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है. अब देखिए पहले इसको देखते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 तो कॉमन आ गया. अब ये x और a कॉमन नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे. यहाँ से देखें तो y कॉमन आ रहा है, अगर y सेम है तो हमने उसको कॉमन ले लिया. अब यहाँ पर कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, सो व्हाट द नंबर विल बी हियर, x माइनस a. Now again, which you can see the whole bracket is common or whole bracket is same, so we took the bracket common, x minus a, and the left number will be 3 plus y. Now moving towards another type, that is the same type just like this one. Now what is the difference here, you can see there is a number that exists here, and that is the common in all the 4 terms. Now what is the meaning of term, 1 2 3 4, there are 4 terms of this question. Now r is common. Maybe there is a question in your mind why we took r common. So when you are talking about the common, you have to take the common that is the least power or the smallest power. Now in this question you can see the r power 1, r power 2, r power 2 and r power 3. Now what we will do, take the r power 1, that is the least power. What will happen here, PQ left because r is common. Now Q will stay here. There are 2 powers of r, the one is common, the one will be here. Minus will be as it is. P is not common, that's why it will stay here as it is. There are 2 r, the one is common, the one will be left here. There are 3 r, the one is common, 2 will be here. Now using this law, what we'll do, now you can take the first 2 terms and the last 2 terms. What will be the common literal, that is q, because the q is same. Now p plus r. Now here r is common, then p is here, minus minus plus and minus minus plus. Now r plus r into r, that is r square.
Then you can see the whole bracket is same, that is p plus r. You can take the p plus r common. The left term will be q minus r. Okay, the next factorization. Again, you can see there are three terms, 1, 2, 3. Now, there is no number you can see common because 25, 16, they all are different number. What else we can do is that first we have to arrange the question, and how we can arrange it. First x power 2, then x power 1, then plus 16. Okay, you can arrange this way. Then you can see 25 is a perfect square and 16 is also a perfect square. Now, if we just go through to the last video, when we have just discussed that when the two number first and last are perfect square, then we have to apply the formula, that is 5 square, that is 25, 4 square, that is 16. In middle we have plus as it is, 2, that is of formula, first number, second number, and then we close the question, the closing the formula. When you open this, definitely you will move like this from down to upside and you will get this answer. But this time the closing form of the question. Now the sixth part, that is 12x square minus 36x plus 27. Again, you can see 27 is not a perfect square. 12 is also not a perfect square. If we just focus here, we can take 3 common because 3 is the number that divide 12, 36 and also 27. So we are going to take 3 common, then 3 4s are 12, 3 12s are 36 and 3 9s are 27. Now what will happen? You can see 4x square and 9 are the perfect square. Applying the same strategy here, so we will just do 2x square, 3 3s are 9, then minus 2 first number, second number, and then this is the closing form. They are same, just there's a positive formula and this is the negative formula. Now there is another question, 4x square minus 2y minus z whole square. Okay, this is the very famous, or you can say very that we use this formula a lot. Or you can see this is the perfect square. We can close it like this, and this is also the perfect square. Now using that formula, a plus b and a minus b, this is a plus b and this is a minus b. Okay, then what we'll do, why I'm just putting the bracket here, because minus sign will change the sign inside. So when you just write the plus, no need to put a bracket sign, but when there is a negative sign, you have to put the bracket sign. Now minus plus minus and minus minus plus. So this is the final solution of the question. No more further simplification is possible here. You can just leave this question here. Now moving towards the next question, that is, maybe that is the repeated question. Yeah, this is the repeated question. So you can just leave this question. Now moving towards the next part, 6x4 minus 96. Now you can see that common number, that is 6. 6 ones are 6 and 6 16s are 96. Then we have to apply the formula, that is a square minus b square again. 2 2s are 4 and 4 square, that is 16. Now once in positive and once in negative, we just open the formula. Again, this is the positive term. You can't solve it. It will stay here. It will sustain itself. Now what we'll do, again applying the same formula, a plus b and a minus b. So this is your final solution. No more further simplification is possible. Now there is another type of factorization. Again this is exercise number 5.1 और ये 5.1 के relevant example हैं जो ये वाली हैं, ये और ये जो है. Okay, in this question you can see the first 3 terms we can close the formula and you can just have, because this is a perfect square, ये separately इसको ऐसे लिखें. ये देखें तो a plus b whole square formula is just closing, going towards the closing form as it is. Now again a square minus b square, this is a plus b and a minus b. Maybe there is a question in your mind कि इस क्वेश्चन में हमने यहाँ ब्रैकेट लगाई और यहाँ हमने ब्रैकेट अप्लाई नहीं की. यहाँ गौर से देखें तो ब्रैकेट के बाद 2 नंबर हैं, क्योंकि अगर 2 नंबर है तो उनके साइन तो चेंज होंगे, और यहाँ ब्रैकेट के बाद 1 नंबर है, उस 1 नंबर के साइन आपके चेंज नहीं होंगे. तो जब अगर ये चीज़ यहाँ होती और ये यहाँ होता तो आप ब्रैकेट लगाते, अदरवाइज यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन they are same, this one, this, they are of same category. Okay, now
वन इज़ जस्ट यू कैन सेपरेट दिस नंबर. यहाँ से अगर हम एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, देखिए अब यहाँ पर कुछ और कॉमन नहीं आ रहा तो हमने एक नेगेटिव नंबर भी कॉमन ले सकते हैं. माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस. Okay, now just arrange this question. A square minus 2ab plus, you can arrange like this, and when you arrange the terms there is no need to change the sign. This is very important, so just keep in your mind. Now this is a minus b whole square. You can write 1 as a perfect square because 1 is a perfect square. Again using this formula, like 1 square minus a minus b whole square. Once they will be in positive term and once they will be in negative form. 1 plus, अब देखिए प्लस है तो मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाई. अगेन 1 माइनस, बिकॉज देर टू नंबर सो यू जस्ट पुट द ब्रैकेट साइन. तो ये ब्रैकेट साइन बाद में माइनस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस. सो दिस इज द अनदर फॉर्म दैट इज डन. अब देखिए नेक्स्ट. नेक्स्ट है 9x स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर. ये आपके जो 5.2 है उसके जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है ये उसकी फॉर्म है, ये उसकी फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, जिसमें आप क्या करते हैं यहाँ पर देखें 3, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में लेकर के आना है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है. तो उसको बनाने का जो मेथड है वो ये है कि इसको देखें 3x स्क्वायर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर. 3 3s are 9 and 2 2s are 4. Again 6 square that is 36 and 2 2s are 4. Then once what you have to do, जब फॉर्मूला क्लोज करना होता है तो यहाँ लगाएं प्लस, यहाँ लिखिए वो जो फॉर्मूले में 2 यूज़ करते हैं. what is the first number? This is the first number and this is the second number. Again minus sign, 2 first number and second number. हमने ये काम क्यों किया है कि डियर स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है, ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो आपने लिखी है यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपने कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव के साथ लिखना है तो वही एक्स्ट्रा आपको नेगेटिव के साथ लिखना पड़ेगा, ताकि कुछ ऐसा ना लगे कि क्यों हमने ये चीज़ यहाँ लिखी है. अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो रही हैं और कैंसिलेशन के बाद वापस क्वेश्चन की वही फॉर्म बन रही है. लेकिन ये करना ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म देनी है. अब देखिए इसको अगर इन तीनों को हम कंबाइन करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a plus b whole square. Right now your a is 3x square and your b is 6y square. Then 3 2s are 6, 6 6 are 36 x square y square. अब देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6xy whole square. Again using the formula a plus b and a minus b. This is complete a plus b and this is complete a minus b. So this is the solution of that question. Now again आप ये कह रहे होंगे कि ऑल आर मिक्स. येस दीज आर मिक्स बिकॉज ये इसी ऑर्डर में है और मैंने खुद इनको मिक्स किया है ताकि अगर कभी पेपर में ऐसे हैफेजडली कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन. Now again the three terms. Now you have to actually understand what you have to do because the first number is perfect square but the last number is not perfect square. What happen if the first and the last number both are perfect square? Then you have to close the formula or you have to go that kind of factorization. But right now the last number is not perfect square, so we will just do the midterm break. Okay, now this is 3 4s are 12 and minus 3 minus 4 that is minus 7. X is common, then x is common, this will be x minus 3 and minus 4 is common, 4 1s are 4 and 4 3s are 12. Now x minus 3 is again common and this will be x minus 4. Again 36, 1s are 36, 9 4s are 36 and 9 minus 4 that is 5. X is common and minus 4 is common, 4 1s are 4, 4 9s are 36. X plus 9 is common and x minus 4 is common. Here 8 9s are 72. Then 24 minus 3 is 21 and when you multiply it will be 72. Then 3x is common, 3 3s are 9x, 3 8s are 24. Minus 1 is common, 3x plus 8. Now 3x plus 8 is common, 3x minus 1 left. Again, in this question, your first priority should be like that if there is something common then go for it and don't leave that chance, because when you take common any number then what happen, the question will be more simplified and more easier. You can see 2 is common, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 21s are 42. Now again now this is the complete form of question like these three questions. Now 7 4s are 7 3s are 21, 7 minus 3 4, because you need a negative sign so we'll just apply minus with the biggest number. Now x is common and here 3 is common.
then x minus 7 is common and x plus 3 will be as it is. Again, the first and the last number, you can see they both are not perfect square, so we just do like with this method. Now 35 6 are 21 tens are 210, and 35 6 are 210, and when you add you will get 41. They both have the negative sign because minus minus plus, and you need a bigger number sign, so you will of course this criteria get hold with this condition. Now 5x is common. If there is xy, so you have to put xy here. But in these questions, this is only x, so you will write only xx, xxx, xxx, xxx. But if this is xy, you have to write xy in both the terms, with both terms. Now 5x is common, 5 2s are 10x, and 5 7s are 35, and x is common, then y will be as it is. Now 3y is common, 3 2s are 6, and because y is common, x will be here, minus plus minus, and 3 7s are 21, y is common. Now the whole bracket is common, like 5x, you can also like this 5x minus 3y, or you can write firstly 2x minus 7y. इससे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो आप यहाँ से जो चीज़ लिखी है पहले 2x माइनस 7 में मैंने बाद में लिख दी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और उसके बाद क्या रह जाएगा 5x माइनस 3y. सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रिव्यू एक्सरसाइज. डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप देखें कि इतनी सारी मिक्स काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन है आपके चैप्टर नंबर 5 में 9th क्लास के, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट हैं, और ये आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि चैप्टर 5 की आप अगर लॉन्ग नहीं भी करते, बट यू हैव टू सॉल्व ऑल द शॉर्ट क्वेश्चन. आपने तो लॉन्ग भी नहीं छोड़ सकते, यू कांट से एनीथिंग अबाउट द पेपर, अबाउट द फाइनल पेपर, बट शॉर्ट आपको करने पड़ेंगे हर हाल में, बिकॉज यू विल गेट दीज क्वेश्चन इन योर एग्जाम, in your board exam. So these questions should be at your first priority. Do practice them a lot, at least 2 to 3 times, then you will get these questions. Okay, now I'll see you the rest of the chapter 4 the reviews. हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 की रिव्यू जो है वो डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.